Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the exercise questions of the poem Mercy. कल जो हमने poem Mercy पढ़ी उसी के सवाल आज हम देखेंगे. What does these questions tell us? So question number 1 is, where does the quality of mercy come from? Who are blessed by it? जो ये quality of mercy ये कहाँ से आती है और किन किन के ऊपर ये मुबारक होती है? So question number answer क्या है? The quality of the mercy comes from the heaven and takes place in the heart of the person who deserves it. जो ये quality of mercy ये कहाँ से आती है? ये heaven से आती है, जन्नत से आती है और उस शख्स के दिल में ये जगह पाती है जो इसके काबिल हो, जो इसके काबिल हो. It is blessed on the people who gives it and on those who takes it. जो ये मर्सी होती है ये ब्लेसड यानी कि मुबारक मुतबारक और मुक़द्दस यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अता होती है. किन लोगों पर होते हैं? हु गिव्स इट जो किसी दूसरे पर जो ये रहम दिली करे मर्सी एंड हु टेक्स इट और जो इसको ले ले अपने अंदर समाए. क्वेश्चन नंबर 2 हु हाउ इज़ द मर्सी बेटर दैन द क्राउन ऑफ किंग. जो ये मर्सी है ये बादशाह के ताज से कैसे बेहतर है, किस तरह ये बेहतर है? देखो, mercy is better than the crown of the king because king is crowned only on the earth thus to show his mighty power, but the mercy takes place in the heart of the kings and comes from the heaven with the mightiest power. जो ये mercy है ये जो क्राउन से इसलिए बेहतर है क्योंकि जो ये क्राउन जो होता है, जो ये बादशाह होता है, उसे ये बादशाहत कहाँ पर मिलती है? ज़मीन पर मिलती है. यानी कि वो ज़मीन के किसी एक मुल्क में वो उसका जो पावर होता है वो चलता है. ऑन द अर्थ ज़मीन पर उसको बादशाह बनाया जाता है. बट टू शो हिज माइटी पावर, बादशाह बनने के बाद वो अपना ताकत दिखाता है कि बादशाह में जितना ताकत होता है उसी के हिसाब से वो अपना काम करता है. बट द मर्सी टेक्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ द किंग्स. मगर जो ये मर्सी है, जो ये रहम दिली है, ये कहाँ ये इन्हीं बादशाहों के दिलों में ये जगह पाती है. एंड कम्स फ्रॉम heaven, कहाँ से आती है ये? जन्नत से. विद द माइटिएस्ट पावर, जन्नत से आती है और ये सबसे ताकतवर होती है. नंबर 3 व्हाट डज स्केप्ट्री स्टैंड फॉर? हाउ डज इट इफेक्ट द किंग. जो स्केप्ट्री स्टैंड जो है, स्केप्ट्री व्हाट डज स्केप्ट्री स्टैंड फॉर? स्केप्ट्री हम किससे कहते हैं? ये बादशाहों पर किस तरह इसका असर होता है? जो स्केप्ट्री स्टैंड्स फॉर रॉयल वैन. स्केप्ट्री मीन्स रॉयल वैन और अथॉरिटी. जो एक बादशाह को जो अथॉरिटी होती है, ताकत होता है, यूज्ड बाय द किंग्स टू शो देयर अर्थली पावर. कौन इस्तेमाल करता है? बादशाह करता है. अपनी जो अथॉरिटी उसको होती है जब वो इस्तेमाल करता है अपना ताकत दिखाने के लिए. while punishing the culprits, कब? जब वो किसी मुजरिम को सज़ा देते हैं. it makes the king proud or dreadful. जो ये स्केप्ट स्टैंड है ये बादशाह को क्या बनाती है? प्राउड बनाती है और सख्त. on the earth and keeps them away from the mercy. ये इनको मर्सी से ज़मीन पर जो रहम दिली है इसे दूर रखती है. उस टाइम वो मुजरिम के जुर्म के हिसाब से उसे सज़ा देते हैं. नंबर 4 when does earthly power look like God. जो ये earthly power होता है यानी कि बादशाहों का जो ताकत है ये कब हमें अल्लाह का जो ताकत है ये हमें कब दिखता है कि नहीं? जैसे ये
جس طرح اللہ ہم سب پر رحم کرتا ہے، اسی طرح کسی وقت بادشاہ بھی اپنے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں، ان پر رحم کرتا ہے. When the mercy is enthroned in the hearts of kings، جب یہ مرسی جو ہوتی ہے جب ایک بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، while punishing the culprits، اس ٹائم جب وہ ملزموں کو سزا دیتے ہیں، using capture than the earthly power، جب وہ اپنی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کا استعمال کرتا ہے، اس ٹائم ہمیں جب جو یہ بادشاہ جب کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اس ٹائم جو یہ the earthly power looks like the goddess power، تو جو یہ earthly power ہوتا ہے زمینی طاقت، یعنی کہ زمین پر سب سے طاقتور جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ اس کا پاور خدا کے پاور کے برابر، یعنی کہ کسی کو بخش دیتا ہے، کسی کو سزا بھی دیتا ہے. Question number 5. How is mercy alone the scepter sway؟ جو یہ مرسی ہوتی ہے یہ کس طرف scepter sway means یہ کس طرح اس کو جو یہ بادشاہ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے یہ اس کو کس طرف سے ہلاتی ہے یا ڈگمگاتی ہے، اس کو کیسے یہ ڈگمگاتی ہے. So mercy comes from the heaven and when it lies in the heart of kings it is kept swaying above because God likes mercy than punishment. جو یہ مرسی ہے یہ کہاں it comes from the heaven، کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے آتی ہے. when it lies in the hearts of kings، جب یہ بادشاہ کے دل میں گھر کر جاتی ہے it is kept sway، جو اسکیپٹڈ جو ہوتا ہے جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو یہ ہلاتی ہے، کیونکہ اسکیپٹڈ سے یہ ایبو ہے، اس سے جو اتھارٹی ہے بادشاہ کی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس سے یہ اعلیٰ ہے. کون؟ مرسی، یعنی کہ رحم دلی اس سے اعلیٰ ہے. بیکاز گاڈ لائکس مرسی، بیکاز جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ رحم دلی کو پسند کرتا ہے. دین پنشمنٹ، سزا کے بجائے وہ رحم دلی کو ہی پسند کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو یہ مرسی ہے یہ ابو اسکیپٹر ہے، اسکیپٹری ابو اسکیپٹری ہے. کوشچن